Hello and welcome. We are beginning a new chapter today in Algebra, which is chapter number 6 called Statistics. And this is the first learning session for chapter number 6, Statistics. Okay. So, what is statistics? So, it is a subject in which data is collected, analyzed, and represented. Okay. So, तीन steps है. First step है एक statistician का data को collect करना. Okay. Second step है जो कुछ भी data मिला है उसको analyze करना. What is the data telling you? Data में से क्या समझ में आ रहा है उसका analysis करना will be the second step of a statistician. And last is उसको represent करना. Okay. So, if I collect lot of data और उसको मैंने एनालाइज भी कर दिया बट अगर मैं सिर्फ नंबर्स दे दूंगा किसी को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस और अंडरस्टैंड इफ यू हैव मेनी नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू सो हाउ कैन यू पुट इट इन द डायग्राम सो दैट उस डायग्राम को देख के बहुत इजीली डेटा को समझ में आ जाएगा ओके सो ऑल दिस इज द जॉब ऑफ अ स्टैटिस्टिशियन ओके in this chapter, they mainly focus on three central tendencies. So what is central tendency? Generally data will be in the form of numbers, right? हमेशा numbers ही होना जरूरी नहीं है, but mostly majority of the data is in number form. Okay. So once you have the numbers, you always want to know उसका central number कौन सा है. Okay. Mean क्या है, average क्या है, बीच वाला number क्या है, so on and so forth. ताकि पूरे data को एक number से तुम represent कर सकते हो, right? So central tendencies find out करने के लिए you have three things you can find out. Okay, first is mean, next is median, and the last one is mode. All of them have certain advantages and disadvantages. Okay, all of them have their own specialities and different things are used depending on the application of that data. Okay, and at the end of this chapter you also have a small part of representation of data. Okay, so where you make histogram and frequency polygon from the data that you have. Okay, so why is that? So that it makes easy for us to understand the data, but majority of the statistics chapter given in algebra focuses on finding these three values: mean, median, and mode. Okay, so what is mean? Mean is a number which takes into account all the numbers given in the data and gives the average value. Okay, so I've given here an example. If this is your data, how will you find the mean of this data? जो कुछ भी numbers है, you first add all of those numbers. And how many numbers are there? Let's count. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. There are 9 numbers, right? So you add all the 9 numbers and then divide it by the total number, which is 9, right? 9 numbers है तो 9 से divide कर दिया. So the number you get is 6.1. So the average value or mean of this particular data set is 6.1. And again, what is the speciality of this particular value? It takes into account all numbers. सारे numbers को add किया, right? इसलिए वो सारे पूरे के पूरे डेटा को कंसिडर करता है. ओके, एंड ऑल दैट डेटा इज कैप्चर्ड बाय वन नंबर विच इज 6.1. ओके, नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. ओके, सो व्हेन यू अरेंज डेटा इन असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा या फिर डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा ऑर्डर, द नंबर in the data which is at the center is called median. Okay, so again I've taken the same example. पीछे भी मैंने यही example लिया था, and for median also we're using the same example. Okay, so the first step is I have arranged it in ascending order. Okay, छोटे से बड़ा. You can do it the other way also, descending भी कर सकते हो, you will get the same answer. So I've arranged it in ascending order. द सेंट्रल नंबर कौन सा है? 7, राइट? 7 के लेफ्ट साइड में भी 4 नंबर, राइट साइड में भी 4 नंबर. सो द सेंट्रल नंबर, द नंबर एट द सेंटर इज 7. सो द मीडियन इज 7. ओके, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन? जिसकी इट ऑलवेज टेल यू द सेंट्रल नंबर. ओके, डज इट टेक ऑल नंबर्स इनटू अकाउंट? द आंसर इज नो. अगर समझो यहाँ पे 2 के जगह पे 1 होता, इट वुडंट हैव मेड एनी डिफरेंस टू इट. यहाँ पे 2 के जगह पे 3 होता, फिर भी मीडियन सेम रहता. यहाँ पे 9 के यहाँ पे 9000 होता, फिर भी तुम्हारा मीडियन 7 ही होता. 9000 के यहाँ पे 9 करोड़ होता. ओके, सो 2 3 5 5 7 8 8 8 9 करोड़, फिर भी तुम्हारा मीडियन 7 ही होता. व्हाई? बिकॉज मीडियन को फर्क नहीं पड़ता बाकी नंबर्स कौन से है, लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स है, राइट साइड में कौन से नंबर्स है, उसको फर्क नहीं पड़ता. उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि सेंट्रल नंबर कौन सा है. ओके, सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? कि सारे नंबर्स को कंसिडर नहीं करता. इट विल ओनली गिव यू द सेंट्रल नंबर. ओके, the last one is mode. Okay, mode is again very simple. The number in the data which comes the most number of times is called mode. Okay, so 5 दो बार आता है, right? एक बार, दो बार. 5 दो बार आ गया, but 8 3 times आता है. 1 2 3. because 8 is coming 3 times, सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, इसलिए mode हो जाएगा 8. Okay, so again what is the
एडवांटेज इट्स वेरी सिंपल राइट, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, सारे नंबर्स को कंसिडर नहीं करता. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 के जगह पे 0 होता, इट डज नॉट केयर. यहाँ पे समझो 2 7 होते, इट डज नॉट केयर. बाकी सारे नंबर्स समझो बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े होते. फॉर एग्जांपल instead of 9 I had 9000 and instead of 7 I had -0.2. It does not care. सबसे ज्यादा टाइम कौन सा है, 8 आ गया, so 8 मोड हो जाएगा. So it has advantages and disadvantages. Okay, so why should we learn this chapter? Okay, so the reason we should learn this chapter is we are already using mean median mode throughout our lives. For example, तुम्हारा बोर्ड का जो मार्कशीट आएगा उसमें जो फाइनल परसेंटेज होगा, व्हाट इज दैट, मीन मीडियन और मोड. द आंसर इट इज मीन. ओके, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि मीन होना चाहिए तुम्हारे बोर्ड के मार्कशीट पे? मोड दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सो से फॉर एग्जांपल आई स्कोर 40 मार्क्स इन 40 परसेंटेज इन 3 पेपर्स and 80% in fourth, 90% in fifth and 95% in sixth. ओके, पहले 3 पेपर्स में मैंने 40% लिया, फिर बाद में 80, 85, 90. ओके, सो व्हाट विल बी द मोड? अगर समझो कल से बोल दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि हम लोग मार्कशीट पे मीन नहीं देंगे, तुम लोग का मोड देंगे. ओके, सो मुझे 3 पेपर्स में सेम 40% आ गया, तो मेरा परसेंटेज कौन सा देंगे वो लोग? फाइनल 40%. बट उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाकी के 3 पेपर में मुझे 80, 85, 90% आया, राइट? सो मोड का वो डिसएडवांटेज है, तुम लोग मोड यूज नहीं कर सकते. सेम टू सेम फॉर मीडियन, मीडियन को तुम यूज नहीं कर सकते कि वो सारे सब्जेक्ट्स को अकाउंट पे नहीं ले रहा है. सो यू वांट अ नंबर विच विल टेक इनटू अकाउंट ऑल द मार्क्स, राइट? क्योंकि तुम लोग ने हर सब्जेक्ट के लिए मेहनत की है, तो हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए उन सबको, सबका डेटा कंसिडर करके तुम्हें एक नंबर मिलना चाहिए. सो दैट्स व्हाई मार्कशीट्स में हमेशा मीन यूज करते हैं, बिकॉज इट कंसिडर्स ऑल द नंबर्स. ओके, next let us take for example median. Okay, when will you use median? So if I ask you what is the average salary of an Indian, तो एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन फाइंड आउट करने के लिए तुम लोग क्या करना पड़ेगा? इंडिया में जितने भी लोग हैं सबकी सैलरी को ले लो, उन सैलरीज को ऐड कर दो और इंडिया के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, राइट? दैट्स द मीनिंग ऑफ मीन, राइट? सारे नंबर्स ले लो, उसको ऐड कर दो, जितने नंबर्स ऐड किए उससे डिवाइड कर दो. सो अगर मैंने एवरेज सैलरी ऑफ एन इंडियन पूछा तो तुम्हें सबके सैलरीज को ऐड करना पड़ेगा जो कोई भी इंडियन है, और जितने भी इंडियन से उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? अगर तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग को आंसर 1 लाख 2 लाख पर मंथ आएगा. ओके, व्हाई इज दैट? क्योंकि अंबानी, अडानी, ये सब जो पैसे वाले लोग हैं, ये लोग महीने में करोड़ों रुपए कमा देते हैं. ओके, इफ यू टेक देयर सैलरीज इनटू अकाउंट, एवरेज इंडियन का सैलरी 1 लाख 2 लाख पर मंथ हो जाएगा. उतना है क्या? A common man in India, does that person have 1 lakh or 2 lakh salaries? No, right? ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, राइट? और उन कुछ लोगों की वजह से वो पूरा का पूरा जो मीन है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. बट तुम्हें जो डेटा चाहिए था, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राइट? कॉमन मैन इन इंडिया डज नॉट मेक 1 लाख 2 लाख पर मंथ. यहाँ पे तो 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा है कॉमन मैन के लिए. तो उसके लिए तुम लोग क्या यूज करोगे? मीडियन यूज करोगे. ओके, तो सबका सैलरी निकाल दो और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. तो सबसे कम जो सैलरी है उसको स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा इसका सैलरी उसको लास्ट में, और फिर बाद में मीडियन निकालो. मीडियन यानी जो सेंटर में नंबर आएगा. तो जो सेंटर में नंबर आएगा वो तुम्हें बताएगा कि इंडिया का एवरेज मैन कितना सैलरी कमा रहा है. ओके, क्योंकि उस सैलरी के लेफ्ट साइड में भी उतने ही लोग हैं और राइट साइड में भी उतने ही लोग हैं, तो तुम्हें वो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है तुम्हें करेक्ट पिक्चर देगा कि अच्छा इंडिया का कॉमन मैन कितने पैसे कमा रहा है. तो वो तुम्हें 1-2 लाख नहीं आएगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता, मीडियन को फर्क नहीं पड़ता कि राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम में कौन से नंबर्स है. बस असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सेंट्रल नंबर बता देगा, विच इज व्हाट वी वांट, राइट? कॉमन मैन जो सेंटर में है इंडिया के, उसका सैलरी चाहिए. सो दैट इज मीडियन. मीडियन वहां पे यूज करते हैं. नेक्स्ट, लास्ट इज मोड. ओके, सो आई थिंक आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल लास्ट टाइम आल्सो. अगर तुम लोग ने एक समझो शर्ट का दुकान खोल दिया, ओके, एंड यू हैव योर ओन फैक्ट्री, तुम्हारे फैक्ट्री में शर्ट्स बन रहे हैं. नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस, राइट? 3 ऑप्शंस फॉर साइजेस, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, और तुम लोग को 300 शर्ट्स बनाने. सो व्हाट विल यू डू? विल यू मेक 300 स्मॉल शर्ट्स, 300 मीडियम शर्ट्स एंड 300 लार्ज शर्ट्स? ऐसा करोगे तुम लोग? नहीं, राइट? तुम लोग पहले थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करोगे कि सबके अलग अलग साइज, शर्ट के साइजेस क्या है, राइट? उसमें समझो पता चला कि ज्यादातर लोग का शर्ट का साइज एल है, लार्ज है. यानी क्या? मोड क्या है उस डेटा का? लार्ज. सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव देयर शर्ट साइज एज लार्ज. तो तुम लोग मोड को यूज करोगे
तो तुम मोड के 200 शर्ट्स प्रिंट करो, फिर बाद में विच इज लार्ज के तुम 200 शर्ट्स प्रिंट करो, फिर स्मॉल साइज का 50 एंड मीडियम साइज का 50 शर्ट्स प्रिंट कर दो, ओके, या फिर बना दो। व्हाई इज दैट? क्योंकि तुम लोग को चाहिए सबसे ज्यादा लोगों का जो शर्ट का साइज है उसके ज्यादा शर्ट्स बनने चाहिए, राइट? सो इस केस में तुम लोग डेटा को लेके कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर रहे हो, मोड यूज कर रहे हो। अनदर एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव यू ऑल इज, अगर समझो तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं समझ में आ रहे, ओके, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हेन यू सर्च क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, राइट? तुम लोग कौन सा वीडियो देखोगे उसमें से जिसके सबसे ज्यादा व्यूज है, इजंट इट? वही सबसे ऊपर आता है, राइट? तो सबसे ज्यादा व्यूज है यानी क्या, जो वीडियो सब लोगों ने बार बार देखा है, फिर बहुत सारे लोगों ने सेम वीडियो देखा है, वो वीडियो तुम पहले देखोगे। सो यहाँ पे भी तुम लोग मोड यूज कर रहे हो। सो यूट्यूब में भी मोड यूज होता है, तो सबसे ज्यादा वीडियो के व्यूज होते हैं वो सबसे टॉप में आ जाता है। इट इज यूजिंग मोड, ओके, great. So now we know where and how mean is used, where and how median is used, where and how mode is used, okay? सबके अपने advantages disadvantages है, and depending on the application you choose which to use, okay? So now we know why to study this chapter. It's an interesting chapter, okay, and it is an interesting chapter. It's a very simple chapter and it is a very scoring chapter also. And statistician ये job is also आजकल काफी डिमांड में है. So if you do 11 12 science and then do BSc statistics, you get very good jobs after doing BSc statistics, okay? So it's a good option to look for. Great. Now we can move ahead. The objective for today is going to be students will be able to find mean using direct method. Okay, so there are total 3 methods to find mean. First is direct method, next is assumed mean method, and last is stepped deviation method. So the last 2 methods have been cancelled from your syllabus for this year because of the lockdown. Okay, so assumed mean method and stepped deviation method तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ direct method पढ़ना. So because of this, there are only 2 sums which remain in the practice set 6.1 which you have to practice. Okay, this is your objective for today. These are the steps to build skills to find mean using direct method. Okay, just copy it for now, and we'll see what is the meaning of each and every step in through one of the examples. Okay, so for now just copy all the steps here. Okay, so now we can start solving the sums given in practice at 6.1. Okay, these are the only 2 sums which you have to solve. All other sums are omitted because वो cancel कर दिया, syllabus से निकाल दिया. Great. So we can start solving the first sum. What does the first sum say? The following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Okay, so for example time ब्रैकेट में आज लिखा है 0 to 2, तो 7 स्टूडेंट्स 0 से 2 hours के बीच में पढ़ाई करते हैं. ओके, 18 people study between 2 to 4 hours every day, 12 people study between 4 to 6 hours every day, 10 people study from 6 to 8 hours, between 6 to 8 hours every day, and 3 people study between 8 to 10 hours every day. इसमें तुम लोग होने चाहिए, राइट? ओके, तुम लोग 10th स्टैंडर्ड है, तुम लोग को रोज कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना चाहिए. ओके, तुम लोग अगर यहाँ कहीं पे, अगर तुम लोग यहाँ पे हो फिर तो भूल ही जाओ 10th स्टैंडर्ड. ओके, एंड either you should be here or here. Okay, I know this was not the point of this question, but anyway, तुम लोग 10th स्टैंडर्ड है, तुम लोग को यहाँ पे होना चाहिए, इन 3 में तुम लोग का नाम होना चाहिए. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया यहाँ पे कि 7 स्टूडेंट्स 0 to 2, 18 स्टूडेंट्स 2 to 4 hours पढ़ाई कर रहे, so on and so forth. And they have asked find the mean time spent by students for their studies by direct method. Direct method से उनका mean find out करना है. Okay, mean time find out करना. Okay, so what is the first step? Make 4 columns. Okay, columns यानी vertical sections बनाने. Okay, कौन से 4 columns? First will be class which is given in the question. Okay, next is class mark. ये क्या लिखा है मैंने? I यहाँ पे नीचे लिखा है. Okay, and why is that I written? I'll come to that later, but for now just write it X subscript I. So class mark, second column. Third column frequency, when again I'm indicating that by Fi, and frequency is also given in the question, and last is frequency into class mark. Okay, so you have to for first step you have to make these 4 columns. So you make these 4 columns first. Okay, class क्लास में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा. I told you, right? It is given in the question. फिर क्लास मार्क नीचे xi लिख दो. फिर frequency, again frequency I've told you they have given in the question. So number of students ही तुम लोग का frequency, और उसको हम लोग fi बोल रहे हैं. And last column will be frequency into class mark. So frequency क्या है? fi, class mark है xi, तो fi into xi. Okay, so you have made 4 columns and 2 columns are given in the textbook, right? Class and frequency textbook में दिया होता है. Class क्या है तुम्हारा? टाइम,
एंड फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे ये लोग ने हॉरिजॉन्टली लिखा है, सेम टू सेम यहाँ पे वर्टिकली कॉपी करना है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टली दिया, सेम टू सेम यहाँ पे वर्टिकली कॉपी करना है। ओके, सो यू विल कॉपी इट हियर। 0 to 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 to 4 यहाँ पे, 4 to 6 थर्ड, 6 to 8 फोर्थ एंड 8 to 10 फिफ्थ में। सिमिलरली आई हैव डन दिस फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, 7 यहाँ पे, 18 सेकेंड में, 12 थर्ड में, 10 फोर्थ में, थर्ड लास्ट में। ओके, so now our first step is done. We have made 4 columns: class, class mark, frequency, frequency into class mark. Now the second step is fill class mark and frequency into class mark wale columns, right? So we have filled these 2 columns. Now we have to fill the remaining 2 columns. So what is class mark? So class में there are always 2 numbers. Okay, left side में एक होता है and right side में एक. So the leftmost number is called lower class limit, right side number is called upper class limit. Okay, so lower class limit, upper class limit. So what do you do for class mark? You add both of these number and divide it by 2. So 0 plus 2 divided by 2 will be 1. 2 plus 4 is 6. 6 divided by 2 is 3. 4 plus 6 is 10. 10 divided by 2 is 5. 6 plus 8 is 14. 14 divided by 2 is 7. 8 plus 10 is 18. 18 divided by 2 is 9. Okay, so how do you find class mark? इन दोनों क्लास में जो दो नंबर्स है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, दोनों को ऐड कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2. दैट्स हाउ यू गेट क्लास मार्क. ओके, नाउ इस i का क्या नंबर है? सो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, x4, x5. तो ये x1, x2, x3 लिखेंगे जब पे i लिख दे. ओके, सो i कैन बी 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए वहां पे i लिखा है. दैट्स द मीनिंग ऑफ i. कौन सा नंबर है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So this is x1, this is x2, x3, so on and so forth. Okay. Next, you have to find the values in the last column, right? Frequency into class mark. You know, यहाँ पे frequency दिया, यहाँ पे class mark दिया, तो बस उनको multiply कर देना. Okay. So first 7 into 1 will be 7, 18 into 3 will be 54, 12 into 5 will be 60, so on and so forth. तो इन दोनों columns को multiply करके यहाँ पे लिख देना. Okay. So we are also done with the second step. We have filled the class mark and frequency into class mark wale columns. Next, you have to find summation xi into fi. Okay, what is the how do you pronounce this particular name of this particular symbol? Summation. Okay, again it's a Greek letter. So इसको बोलते हैं summation. Summation यानी सबको add करना है. Okay, so क्या add करोगे? x1 into f1 plus x2 into f2 plus x3 into f3 plus x4 into f4 plus x5 into f5, इन सबको ऐड करना है. तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा शॉर्ट में क्या लिख दोगे? समेशन xi into fi. सो i जहां 1 से लेके जहां तक भी जा रहा है, सिमिलरली i यहाँ पे भी 1 से लेके जहां तक भी जा रहा है, उसके नंबर्स चेंज करते रहो, उसको ऐड करते रहो. सिमिलरली यू हैव टू फाइंड summation fi. Okay, so f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5, that will be summation fi. Okay, so basically तुम लोग को you have to find summation fi and summation fi xi, right? So इन दोनों कॉलम्स का बेसिकली टोटल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया. क्लास मार्क का टोटल फाइंड आउट नहीं करना है, इसलिए उसको ब्लैंक रखा है. देन fi का टोटल. ओके, so 7 plus 18 plus 12 plus 10 plus 13 will come 50. So that is a summation fi. Okay, सब fi वाले कॉलम को बस ऐड करना है. f1 plus f2 plus f3, so on and so forth. Similarly, समेशन fi into xi. तो ये तुम लोग ने fi into xi यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया. समेशन यानी सबको ऐड कर देना टोटल. So once you add all of these, you will get 218. Okay, so now we are also done with step number 3. We have found summation xi into fi and summation fi. Now the fourth step is find mean using formula. Mean is equal to, ये mean का symbol है. Okay, capital X और ऊपर एक horizontal line. That's the symbol for mean. So what is the formula? Summation xi fi divided by summation fi. तो समेशन fi xi यहाँ पे लिखा था, राइट, 218, तो उसको यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दो. एंड समेशन fi 50 मिला था, उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दो. एंड दिस सॉल्व दिस. आफ्टर डिवाइडिंग यू शुड गेट 4.36. ओके, देन fourth step is also done. You have found mean using this formula. Last step is final answer in pencil box. Okay, so question कैसे पूछा था? Find the mean time spent by students for their studies, right? So you will write the mean time spent by students for their studies is 4.36 hours. Okay, hours कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे दिया था, right, question में time is in hours. So that is your unit, 4.36 hours, and you have to put this in pencil box. That's your final answer. Generally these types of questions are asked for 2 marks. Okay,
It looks very lengthy, but once you start solving and once you practice 2-3 sums, it is very easy. ये सारे steps अपने आप by heart हो जाएंगे once you start practicing all of them. Okay, so you're done with question number 1. I have solved the entire question for you. Now try to solve the third question by yourself. Okay, I'm going to wait for 5 seconds so that you can solve one step at a time. Okay, so what is the first step? You will make 4 columns और 4 columns में से क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ये कॉलम्स तुम्हें क्वेश्चन में दे दिए. ओके, दिस इज योर क्लास वाला कॉलम, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम. सो जस्ट मेक 4 columns एंड फिल द 2 columns. ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू पॉज द वीडियो एंड फिल, make 4 columns and fill the 2 columns which are given in the textbook. Okay, okay, I hope you have made 4 columns and have filled the 2 columns. So after doing that, these are the 4 columns. class में क्या है, तुम्हें क्या दिया है? मिल्क सोल्ड, लीटर्स में कितने मिल्क, कितना लीटर मिल्क दे हैव सोल्ड, दैट विल बी कमिंग अंडर क्लास मार्क तुम्हें लिखना है. frequency is your number of customers. Okay, that is your fi, and last column is frequency into class mark, and these 2 columns you can fill. Okay, this is again given in the question, same to same you have to copy, and frequency was again given in the question in the second row, that same to same you have to copy. Okay, then how do you find class mark? You add these 2 numbers and divide by 2. So 1 plus 2 is 3, 3 divided by 2 is 1.5, 2 plus 3 is 5, 5 divided by 2 is 2.5, 3 plus 4 is 7, 7 divided by 2 is 3.5, 4 plus 5 is 9, 9 divided by 2 is 4.5. Similarly, last one, 5 plus 6 is 11, 11 divided by 2 is 5.5. And finally, you will find frequency into class mark. Okay, so 17 into 1.5 will give you 25.5. 13 into 2.5 will give you 32.5, so on and so forth. इन दोनों numbers को multiply करके यहाँ पे लिख देना. Okay, so I hope you are able to do this by yourself. Next step. Okay, how many steps are done? We have made 4 columns. We entered the columns given in the textbook, and we have also we have filled the columns, which is the remaining 2 columns, which is class mark and frequency into class mark. What is the next step? Next step is to find summation fi and summation fi into xi, right? So इसका total find out करना है और इसका total find out करना है. So that should be your next step. Again, I'm going to give you all 5 seconds to do that. Okay, I hope you paused the video and have found the summation of fi and summation fi xi. Okay, so this is the total. इसका sum तुम्हें 50 आना चाहिए, इसका sum तुम्हें 141 आना चाहिए. If it is not coming this, just check your calculations. Okay, यहाँ पे एक भी calculation mistake होगी, your final answer will not be correct and you will lose marks. So you have to have very good concentration when you're solving sums on statistics. Okay, so this is your fi, this is your this is your summation fi, this is your summation fi xi. So first step, 4 columns. Second step, class mark and frequency into class mark. Third step, summation fi and summation fi xi. What is the fourth step? Use the formula. What is the formula? Mean is equal to summation fi into xi divided by summation fi. So 141 divided by 50. So 141 divided by 50 will come out to be 2.82. Okay. And what is the last step? Last step, question में क्या पूछा? Find the mean milk sold. So the mean milk sold will be 2.82 liters. Liters है कैसे पता? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, राइट? द यूनिट ऑफ मिल्क सोल्ड वाज लीटर. सो हमें आंसर आया था 2.82. तो फाइनल आंसर विल बी द mean of the milk sold is 2.82 liters, and you will put that in pencil box. Okay, so I hope you are able to solve this question by yourself. If you were not able to solve this question by yourself, it's okay, just make corrections and make sure you're focusing. Okay, only when you concentrate you will be able to solve this sum correctly. If you lose focus, कहीं पे भी एक जगह पे भी calculation mistake हो गया, the final answer won't come correct. Okay, and that's it for this learning session. Then just check if you have achieved today's learning objective. Students will be able to find mean using direct method. तो मैंने तुम लोग को और एक टेबल दे दिया, समझो. Will you be able to find mean using direct method? Yes or no? Okay, and if not, then maybe you need some more practice. Okay, so that's it for this learning session. I hope you all understand why statistics is an interesting subject to study. Maybe some of you are considering becoming statistics if you like mathematics and calculations and data. And I hope you all understood whatever I taught today. And I'm just telling you all, this chapter is very simple
and it is very scoring. Okay, all you have to do is practice a lot. अगर एक टाइप का सम तुम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, वो स्टेप्स भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी मेमोराइज्ड बाय इटसेल्फ, अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, तुम्हें अलग से बैठ के बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, so that's it for this learning session. I hope you all had fun, and I hope we'll see each other in the next video. Till then, bye and peace.